Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about John Milton's work on the late Massacre and Piedmont. So, what does mean by this particular sonnet? क्या हाईलाइट किया गया है? जॉन मिल्टन ने कहीं ना कहीं रियलिटी को शो करने की कोशिश की थ्रू दिस सॉन्ग. He was being deprived. अगर मैं बोलूँ उसके कई सारे चेंजेस थे जिनको उसने हाईलाइट करने की कोशिश की. Along with that, he mentioned the basic points जो हमें कैटर करने हैं इस सॉनेट को पढ़ते हुए. Means we need to carry on. Look, the first break कौन-कौन से कॉन्सेप्ट्स में डील करने इन चार पॉइंट्स को आपने याद रखना है when you are dealing with this particular sonnet. The first, it's a sonnet with the theme of good poised people trapped in a dark world. Good poised people trapped in a dark world. The first thing, the good people died. So, what does mean? Concept play करते हैं. Secondly, it's about the struggle of the good and evil, freedom and oppression. Good and evil, freedom and oppression. तो ये हो गई वो दो थीम्स जो हमें हाईलाइट करनी है. क्या नेक्स्ट वन? Milton calls God to avenge. The first line of the sonnet mentions this. Milton calls the God to avenge the Massacres because they have been killed for their Protestant faith. So when you have firm faith on somebody, on the God, or the good things, उसके बाद अगर हम जाते हैं तो उसको हाईलाइट किया सॉनेट में. तो सर इसे एंटी तो नहीं कहेंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं he was having a doubt over the power of. So I need to mention. Look at it. First out, avenge, O Lord, thy slaughter, saint whose bones lie scattered on alpine mountain cold. Look, the first two lines of these sonnets. Avenge, O Lord, thy slaughter, saints whose bones lie scattered on the alpine mountain cold. So the alpine mountain and the good souls, I repeat, the saints, the slaughtered saints whose bones scattered in alpine gold. तो यहाँ पे जो मरे हैं ना, जिनकी बॉडीज वहां पड़ी हैं, slaughter, they are the saints, so the good godly peoples. अब उसके लिए वो मिल्टन अपील कर रहा है to the God to avenge on the death of these people. Then even them who kept thy truth so pure of old, when all our fathers worshipped stocks and stones, when all our fathers worshipped stocks and stones, we do have firm faith. अच्छा यहाँ पे वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है with the people those died, and now he is appealing to God because nothing has really there to stop that slaughter. कुछ भी नहीं हुआ वहाँ. From the God side something must be done. Come to next one. Forget not in thy book record their groans, who were the sheep and in the ancient fold, slain by the bloody Piedmonts that rolled, mother with an infant down the rocks. Their mourns, the values redoubled to the hills and thigh to heaven, their maculated blood and ashes saw. So here we can see how the poet tried to tell the things that had happened at the Piedmont. तो सर यहाँ पे सोनेट की बात की, सोनेट पूरी तरह जाते हैं. It's a something that we describe the some past event. हाँ कहीं ना कहीं कर रहा हो, लेकिन उसने उस चीजों को हाईलाइट किया है. मतलब first octave, as in the first 8 lines of the sonnet are known as octave. यहाँ पे मिल्टन पूरी तरह से गॉड से इमेज की बात कर रहा है टू द स्लॉटर दैट हैड टेकन प्लेस ओवर द पिलमेंट. कहता to heaven they mattered blood and ashes down over all the Italian fields where still doth sway the triple talent that from these may grow 100-fold who having learned thy way early may fly the Babylon woe. So the last lines really do have something to tell you. कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्स को लेकर आ रहा है, कहीं वो एक होप को डिफाइन कर रहा है. तो when you guys are going to read this concept क्लियर करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे आप इसके प्लॉट को समझेंगे, बेसिक मैसेज जो कन्वे कर रहा है उसको गो थ्रू करेंगे. अगर आपके पास एनालिसिस हो तो प्लीज उसको रीड करें, नहीं कर सकते तो प्लीज जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला इन पॉइंट्स को लेके आपने कॉन्सेप्ट फॉर्म करना है. The poetry is all about these things. इन चीजों को हाईलाइट करेगी पोएट्री, and then you guys need to go to the sonnet line by line. हर लाइन को पूरा पढ़ना है, और जब हम लाइन बाय लाइन पूरी सॉनेट पे आते हैं तो विल क्रैक द बेसिक्स.
होप इस वीडियो के थ्रू आप कॉन्सेप्ट को क्लियर पाएंगे एंड दोज हु आर स्टडीइंग फॉर बीईटी 106 गाइस डोंट वरी ऑल द वीडियोस डू कम ऑन दिस चैनल क्लासेस ऑफ लर्निंग. For that you need to like, share and subscribe and don't forget to press notification button so that you get all the notification for your videos. For notes you can contact my number will be there in the description box. All the best.